जितने भी स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं ना, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम so that we can start within 5 minutes exactly. So what is today's topic is? Today's topic is the first one. We will start with our anaerobic respiration. Then we will study about electron transport system. And the last one topic is respiratory question. ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. अब इस चैप्टर का वेटेज वी ऑल वेरी वेल नो कि इस चैप्टर में से कितना क्वेश्चंस आता है. प्रॉक्स 5 क्वेश्चन आता है. एंड इवन 2024 में इट इज एक्सपेक्टेड कि इस चैप्टर में से 6 to 7 क्वेश्चन कैन बी इजीली आस्क्ड. 6 to 7 क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज 2 चैप्टर्स हैज ऑलरेडी डिलीटेड ना. कौन कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी से? हाउ मेनी चैप्टर्स आर डिलीटेड फ्रॉम प्लांट फिजियोलॉजी? 3. No. 2 chapters. The first one is your transporting plant and the second one is mineral nutrition. These 2 chapters is deleted from NEET syllabus as well as आप लोगों का CBSE का syllabus से भी delete हुआ है. Even NCERT से ही delete कर दिया गया है. ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो 3 चैप्टर्स अभी हमारे पास बच चुके हैं. वी आर लेफ्ट विथ 3 चैप्टर्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इन्हीं तीनों चैप्टर्स में आप लोगों का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक रिकैप. क्विक रिकैप में हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन विद ग्लाइकोलाइसिस. In the glycolysis, we were looking like what is the total gain of glycolysis? It was 2 ATP and how many NADH2? 2 NADH2. 2 NADH2. ठीक है, and then link reaction. What is the total gain of link reaction? Ca2 plus 2 NADH2. What is the total gain of TCA cycle or we can say Krebs cycle? 38 ATP. 6 NADH plus 2 FADH. 2 FADH2 plus 2 ATP. that's not ATP, it's GTP. 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 This is the total gain. ठीक है, and we were just looking at the glycolysis. What is the main site of glycolysis? Cytoplasm. Cytoplasm. ठीक है, तो अभी I'm just trying to get into a topic which is your anaerobic respiration. ठीक है, what is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? We are just trying to figure out these two terms. Yes, Shikha. Ma'am, aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. In the absence of oxygen. Very well done. Harshita, do you have anything else? No, ma'am. Same definition. Same definition. So aerobic respiration में हमको शिखा ने बताया कि it happens in the presence of oxygen and anaerobic is Without absence of oxygen. So it means glycolysis is an oxygen dependent process or not? Yes. Dependent. There is no role of oxygen. यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा एज इट इज एंड एज वेल एज इन anaerobic respiration. The first step would be the same for both aerobic and anaerobic. Is it clear to all? Yes, ma'am. First step would be same for both processes. It can be aerobic respiration, it can be anaerobic respiration. Then what about link reaction? What is link reaction? Link reaction is the conversion of pyruvic acid into
Pyruvic acid into acetyl CoA. Acetyl CoA ना. Yes, ma'am. You guys are looking like blank. तो कोई भी रिवीजन करके नहीं आया क्या क्लास में? रिवीजन नहीं किया? How many of you students did revision before coming to the class? Only Harshida and Anushka. Okay, Mishpa, Ashika. Then why are you not answering the basic questions? These are just basic questions that I am asking. चलो, let's start again. ठीक है? So हमारा first one step glycolysis would be the same for both aerobic and anaerobic. ठीक है? एरोबिक एनारोबिक दोनों के लिए ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है वो सेम रहेगा. देन व्हाट अबाउट लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन के अंदर हमको देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन. तो इट मींस लिंक रिएक्शन वुड गेट अफेक्टेड. लिंक रिएक्शन अफेक्ट होगा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, let's see how it will affect. When we talk about anaerobic reaction, it can be of two types. The first one we have alcoholic fermentation. Okay, Anushka, no problem. And the second one is lactic acid fermentation. In both processes, glycolysis is carrying out or not? Yes or no? Yes, ma'am. Glycolysis Yes, यहाँ ma'am. steps में हो रहा है. It means glucose is getting converted into pyruvic acid. Same here also. Glucose is getting converted into pyruvic acid. ठीक है? Then after conversion of pyruvic acid in aerobic reaction, what happens in aerobic reaction? Pyruvic acid get converted into Acetyl CoA. acetyl CoA. Acetyl CoA. But if there is absence of oxygen, pyruvic acid will not get converted into pyruvic acid Acetyl CoA. Acetyl CoA. एसिटाइल को. सो इट मीन्स यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट बनेगा. कुछ और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे. वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है हमारा? वो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? राइट इट हियर. पायरुविक एसिड will get convert into just look at the name of the process, alcoholic. That means Ethanol. yeah, ethanol will form. But this is a again two-step process. Pyruvic acid, firstly pyruvic acid will get convert into acetaldehyde. Firstly it will get convert into acetaldehyde, and then acetaldehyde will get convert into ethanol. Then this acetaldehyde will get converted into ethanol. This is a two-step process. Firstly, glucose is converting into pyruvic acid. Then pyruvic acid will get converted into acetaldehyde. Then acetaldehyde will get converted into ethanol. Is it clear? At the end, what we are forming? An alcohol. That's why this process is known as alcoholic fermentation. This process is known as alcoholic fermentation. ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे enzymes का नाम देखेंगे. What is the role of enzyme? Just their names. The first enzyme we have here is pyruvate decarboxylase. Again, pyruvic acid is how many carbon compound? How many? 3 carbon compound.
3 carbon compound. Very good. 3. And acetaldehyde is how many carbon compound? 2 carbon compound. 2 carbon compound. So there should be a single loss of carbon. Carbon will get lost in the form of CO2. CO2. Very good. तो it means यहाँ पे हमारे पास एक CO2 का molecule भी release होके आएगा. We have glucose is a 6 carbon and by one molecule of glucose we got how many pyruvic acid? 2 molecules. And on the same time we will get 2 acetaldehyde. So in the same case we will get 2 CO2 from here. ठीक है, हमारे पास एसिटल्डिहाइड बन गया है, इट इज एन एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं? एल्कोहल. इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन योर केमिस्ट्री. एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिटल्डिहाइड इज योर CHO and ethanol is OH. Oxidation. No, It's reduction. it's reduction. Reduction. Aldehyde से alcohol बनाने का process is reduction. So acetaldehyde is getting reduced into ethanol. So there is a involvement of enzyme which is known as alcohol dehydrogenase. And in this process, we are using two NADH2 molecules. We are using two NADH2 molecule. अब इसको just recap करते हैं एक बार. हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनवाया. पायरुविक एसिड से हमारा टोटल गेन क्या था? What was our total gain with pyruvic acid? 2 ATP with 2 NADH. था? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. पायरुविक एसिड से हमने क्या बनवाया? What we have done with pyruvic acid? Pyruvic acid get convert into acetaldehyde. Acetaldehyde. There is no formation of energy. यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बन रहा है. Then acetaldehyde is getting convert into ethanol with the use of 2 NADH2. So it means at ethanol point मेरा total energy gain कितना है? What is our total energy gain in an anaerobic respiration? No energy is required. 2 ATP. 2 ATP. हमारा जो 2 ATP है, पूरा जो अगर हम बात करें पूरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना एनर्जी मेरे को मिला? जैसे व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास में हमने देखा था टोटल नेट गेन कैलकुलेट किया था. कितना एटीपी था हमारा? दैट वाज 38 एटीपी ना. Yes, Yeah. ma'am. तो Yes, अभी ma'am. एनारोबिक रेस्पिरेशन का टोटल गेन कितना है? 2 एटीपी. 2 ATP. सिर्फ 2 एटीपी है. ठीक है. एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये जो रिएक्शंस चलता है कहाँ पे चलता है? ईस्ट के अंदर. ईस्ट के अंदर आपका ये प्रोसेस देखा जाता है. पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज जो होता है एंजाइम, दिस एंजाइम यूज अ मेटल आयन. एक मेटल आयन यूज करता है विच इज योर Mg+2. समटाइम्स इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है. एंड इन द केस ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इट यूज Zn+2. Write down this entire process. Let's start with a lactic acid fermentation. Done? Let's start with lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation may be again same. We have glucose. Glucose is getting converted into pyruvic acid with 2 ATP and 2 NADH2 molecules. And then this pyruvic acid will get converted into lactic acid.
This is a single step process. It is getting converted into lactic acid and it will use here 2 NADH2 molecules. 2 NADH2 molecules का ये use करेगा lactic acid बनने में. तो it means यहाँ पे भी हमारा जो net gain है, what is our net gain? 2 ATP. 2 ATP. There should be also involvement of an enzyme. यहाँ पे एक enzyme का involvement होगा. That enzyme is your lactate dehydrogenase. These enzymes are very important. And where this process is going on? Lactic acid fermentation. Milk. No. Lactic acid fermentation in the absence of oxygen in your muscles. Yes, ma'am. Do you guys feel any cramps in your thighs region after having vigorous exercise? Yes, होता master. है ना, क्रैम्प्स हो जाता है. एक दिन फिजिकल एजुकेशन का जो पीरियड होता है, पीटी टीचर होते हैं, वो बहुत ज्यादा रनिंग करा दिया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपने कर लिया किसी दिन, यू जस्ट फील पेन इन योर मसल्स. वो किस वजह से होता है? बिकॉज जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ विग्रस एक्सरसाइज आपकी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है. ड्यू टू द absence of oxygen, due to the lack of oxygen, your glucose getting converted into lactic acid. Glucose get converted into lactic acid in the absence of oxygen, and this lactic acid cause pain in your muscles. ठीक है, तो there is a huge difference ना aerobic और anaerobic के केस में. Aerobic is giving us how many total ATP? 38. But when it comes to anaerobic respiration, this 2 is ATP. 2 ATP. ठीक है, तो we can say कौन सा प्रोसेस हमारे लिए बेनिफिशियल है? Which process is beneficial for us? Anaerobic. Anaerobic. Anaerobic or aerobic? Aerobic. Beneficial. Aerobic beneficial Aerobic rest. because it is giving us more and more energy. They're giving us 38 ATP. But anaerobic is just giving us 2 ATP. सिर्फ 2 ATP हमको मिल रहा है. ठीक है, चलो. Now we are done with our first step, which is your anaerobic respiration. Let's come with our next topic. This is your electron transport system. Can anyone tell me what is electron transport system? Ma'am, we can say that it is a metabolic pathway through which electron passes. Through which electron passes. Achha, what exactly we can say? What is the use of ETS? Why it is very important for ourselves? It is very, very, very important. It's just like a bank. ETS is just like a bank. हम लोग बैंक क्यों जाते हैं? To store our money. उसके अलावा भी if someone gives you a check, if someone gives you a check instead of cash money, then you just go to the bank and get converted that cash into a convert your check into a cash. Ma'am, it also helps in utilizing the energy which is stored in our body in the form of NADH and FADH. Exactly. We all know very well we are getting NADH. Okay? NADH is also is like a stored form of energy. So we need to go to the ETS. These NADH and FADH needs to go to the ETS, and with the help of ETS, what ETS will do here? ETS will convert this NADH and FADH into ATP. ATP में हमको कन्वर्ट करके देगा. NADH और FADH को ATP में कन्वर्ट करके देगा. ATP is just like a cash की फॉर्म में जब हमारे पास मनी होता है. NADH and FADH is like in the form of check
चेक हर जगह एप्लीकेबल होता है क्या? आप किसी भी शॉप पे जा रहे हो, उसको 15 रुपीज का चेक दे रहे हो, उसको किसी को 100 रुपीज का, क्या वो एक्सेप्ट करता है? नो मैम। नहीं करता है ना। तो इट मीन्स हमारे पास जो सबसे बेनिफिशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? कैश की फॉर्म में होनी चाहिए। ऑन द सेम साइड इफ इट कम्स टू द सेल, तो हमारे पास एनर्जी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ओनली, एटीपी है ना? राइट। एंड वन एनएडीएच विल गिव अस हाउ मेनी एटीपी? 3 3 ATP. ATP. Very good. And one FADH will give us how many ATP? 2. 2 ATP. 2 ATP. Very well done. So this is our basic steps. That means if one NADH will goes into the ETS, then it will give us 3 ATP in return. Return में वो हमको 3 ATP देने वाला है. अब the next question is, ये बैंक रहता कहाँ पे? What is the location of this ETS? What is the location of this ETS? ETS का लोकेशन क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या लोकेशन है इसका? In the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसका हमारा मेन लोकेशन है. लेट्स सपोज आई एम जस्ट ड्राइंग अ माइटोकॉन्ड्रिया हियर. ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा बिग बनाते हैं. Make it little. Inner membrane of mitochondria are known as inner membrane of mitochondria are known as. बच्चों आपने अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया है जो अभी आपको ग्रुप में शेयर किया गया है? No मैम. चल, जब तक मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग सब अपना अपना एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो. ठीक है, एवरीवन जस्ट मार्क योर अटेंडेंस जब तक मैं ड्रॉ कर रही हूँ. Attendance marks होता रहे. After marking your attendance, just give me a thumbs up, or you can also write in the chat section, done ma'am, so that we can start with our topic. But you need to just write your registered mobile number. Write your registered mobile number. Registered mobile number is like your number which you have given in Avanti during registration. At the time of registration, which number you have submitted, just write down. Hurry up, bachcho. Okay then. So let's start. We all know the inner membrane of mitochondria is known as crista. So in the inner membrane of mitochondria, there are some electron carriers. Try to make it with different color. Yeah, we have some electron carriers.
What can be the function of these electron carriers? Electron carriers. It means these are the carriers which carry electron from one to another. इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे ना ये लोग. एंड हमारा ये जो इनर सेंटर में है, वी हैव दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अभी आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसमें स्टूडेंट समटाइम्स गेट स्टक. इनर स्पेस वी ऑल नो इज मैट्रिक्स. Yes, ma'am. ठीक है, एंड मैट्रिक्स के अंदर ही वी वर कैरिंग आउट आवर टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन वाज आवर लिंक रिएक्शन एंड सेकेंड वन Glycolysis. Glycolysis is happening in cytoplasm. Krebs cycle. Krebs cycle. Krebs cycle and link reaction. These are the two processes which are carrying out in matrix only. ठीक है, तो it means in matrix, how many NADH and FADH get accumulated? Total 2 NADH2 from link reaction and 6 NADH2 from Krebs cycle. Krebs cycle. so, these are total how many NADH? 8. 8 NADH. And 2 NADH are coming from glycolysis step. 10 NADH. तो in total we have कितने NADH हो गए? 10 10. 10 NADH2. And how many FADH2? FADH2. 2. So in the matrix region, we have 10 NADH2 and 2 FADH2. So what is the main function of ETS? ETS will get to convert these 10 NADH2 and 2 FADH2 into ATPs. ये NADH2 और FADH2 उससे क्या बना के देगा? हमको ATPs बना के देगा. अब हमको ये सीखना है what we are going to learn in this process. In this process we will learn how it is getting converted into ATP. ये इसको ATP में कन्वर्ट कैसे कर रहा है. ठीक है, so the first step which is carrying out here, these NADH2, these NADH plus H positive, we can write it like this, is getting reduced into NAD positive plus 2H positive plus 2 electrons. This reaction is carrying out in matrix. Is this reduction or oxidation? You guys will tell me. Is this reduction or oxidation? Reduction. Oxidation, because here is removal of hydrogen. And there is also loss of electron. Loss of electron is oxidation. Gain of electron is reduction. ठीक है ना? तो it means matrix के अंदर हमारा क्या चल रहा है? Oxidation. Oxidation. All the NADH2 and FADH2, those are coming from glycolysis, link reaction, Krebs cycle, are accumulated in matrix, and just after coming into the matrix region, they are getting oxidized. And after oxidation, they are giving us NADH positive, 2H positive, and 2 electrons. Okay? And this NADH2 will get back to link reaction or Krebs cycle, because वहां पे NADH से हम लोग क्या बनवा रहे हैं? NADH बनवाएंगे और ज्यादा. तो ये NADH तो वापस से साइकिल्स में चला जाएगा. अब ये जो H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स है, वी हैव 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. इनका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ दीज 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स? अब यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दीज इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग विद दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. This is your first, second, third. So they will jump from first electron carrier to second, second to third, third to fourth. इस वे में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ना? Yes, ma'am. कमिंग हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है. एंड जब कोई चीज, इफ समथिंग गेट कन्वर्ट फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, इट रिलीज सम एनर्जी. वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एंड उसी एनर्जी को यूज करके, by using that one energy which is getting released during this process, they will
shift these 2H positive. They will shift these 2H positive from matrix to inner mitochondrial space. This is your inner membranous space now. Yes, ma'am. Inner membrane space. Should I repeat the concept? चलो Yes, एक बार ma'am. फिर से Yes, एक बार ma'am. फिर से समझते हैं. हमारे पास just glycolysis, link reaction, and Krebs cycle. We have three processes. In all the three processes, we are getting 10 NADH2 and 2 FADH2. All these NADH2 and FADH2s are coming into the matrix and getting oxidized, and they are releasing some hydrogen ions, or we can say protons also, na? Yes, ma'am. We can say protons also, Yes, ma'am. and they are also releasing some electrons. These electrons are moving through the electron carriers, and during moving with electron carriers, they are releasing some amount of energy. They're releasing some amount of energy, and by using that energy, जो energy release हो रहा है, उसी energy को use करके matrix क्या कर रहा है? What is matrix doing here? Matrix are shifting hydrogen ions. कहाँ से कहाँ? From matrix to inner membranous space. Because matrix के अंदर we have high proton gradient. Matrix के अंदर proton gradient increase हो चुका है. So we are converting, we are transferring, we are transporting hydrogens या फिर protons from matrix to inner mitochondrial space. Is it done? Yes, ma'am. तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? What we are going to study, what are these electron carriers? इन electron carriers का नाम क्या है? How they will shift electrons? कैसे ये electrons को shift कर रहे हैं? Electrons को shift करते टाइम how they are transporting hydrogen ions? कैसे ये हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स से कहां पे? इनर Inner membrane space. Inner membranes. वेरी वेल डन. सो अब ये जो यहाँ पे डायग्राम अटैच है, दिस डायग्राम इज जस्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. इन दिस प्रोसेस वी हैव 5 कॉम्प्लेक्सेस. हमारे पास टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल हैं. मैं आप लोगों को इनके नाम लिखवा देती हूँ. जस्ट राइट डाउन इट हियर ओनली. वी हैव 5 कॉम्प्लेक्सेस. Write down. Complex number 1, complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5. ठीक है? What is the name of complex 1? Complex 1 is your FMN and FES. अब इसको हमें एज इट इज क्रैम करना है. FMN, FES, which is your NADH dehydrogenase complex. Dehydrogenase complex. So, what is your complex number 1? NADH and dehydrogenase. NADH dehydrogenase. This is a single name. NADH dehydrogenase complex. ठीक है? And the complex number 2 is FADH2. FAD and FES. Name succinate dehydrogenase. नाम याद आया कुछ succinate dehydrogenase से? Yes, ma'am. क्या याद आया? It is an enzyme through which succinyl is Succinate is getting converted into fumarate. है ना? yes, ma'am. That time I told you this enzyme lives where? This enzyme is found in inner mitochondrial space. Oh, sorry, inner mitochondrial membrane. And this enzyme will transport from inner membrane to matrix just to carrying out this reaction. So the second complex is FAD, FES, which is your succinate dehydrogenase. And the third one complex we have, the third complex here is cytochrome BC1 complex. Fourth one complex we have
cytochrome A3 complex. And the last one we have ATP synthetase, which will finally synthesize ATP. Okay? And if we talk about NADH and FADH, NADH, for the conversion of NADH into ATP, we will use only complex number 1, complex number 3, and complex number 4. But in the case of FADH, we will use complex number 3, complex number 4, and complex number 5. Here also 5. ये हमको याद रखना है. NADH कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यूज करता है? NADH यूज 1, complex 3, 1, 4 3, and 4, 5. 5. And FADH 2, 3, 2, 3, 4. 4, 4 and 5. 5. ठीक है, जल्दी से लिख लो. डन. चलो, अब आते हैं हम अपना, लेट्स कम टू आवर बैक स्लाइड जहां पे हमारा डायग्राम. या जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये हमारा जो स्पेस है, दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मैट्रिक्स. ठीक है, एंड दिस इज योर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज योर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस. ये वाला स्पेस, space between outer and inner membrane, is inner membrane space. So in the matrix we have NADH and H positive, which is getting oxidized now. Yes, ma'am. Yes, Is ma'am. getting oxidized and making NAD positive plus 2H positive plus 2 electrons. बना रहा है ना, ये बना रहा है. तो these 2 electrons, firstly these 2 electrons will get accepted with FMN, which is your first complex, and then these 2 electrons will get converted, will get transported to FES. Third complex. FMN से FES is your first Third complex. complex. No, first complex का ही part है ना FMN FES. दो चीजें हाँ, लिखा yes, ma'am. है FMN FES. ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया. अब NADH उसके बाद सेकेंड कॉम्प्लेक्स तो यूज नहीं करेगा, देन इट विल यूज कॉम्प्लेक्स नंबर 3 डायरेक्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर 3 इज योर BC1 कॉम्प्लेक्स, है ना, BC1. तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 3 के बीच में वी हैव मोर स्पेस. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, these electrons will get catched by a electron carrier which is known as UQ. UQ is known as ubiquinone. Ubiquinone is a electron carrier. ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो क्या कर रहा है, it is helping us in transferring electron from complex number 1 to complex number Complex number 3. Complex number 3. Ubiquinone is helping us in transferring electron from complex number 1 to complex number 3. Complex number 3 we have BC1. So firstly the electron get accepted by B, and then B से transfer करेंगे हम किसमें, BC1 को, and then it will get transferred to complex number 4. 4 को जाएगा. बट अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में फिर से स्पेस है काफी सारा. तो उस स्पेस के लिए we needed a electron carrier. So here we have electron carrier is cytochrome C, CYT. CYT is your cytochrome C. Cytochrome C, as you can see here, the ubiquinone is inside the membrane ना. Ubiquinone is inside the membrane. ये blue वाले region में है. It is in the blue वाला region. But cytochrome is not inside the membrane. It is on the surface of membrane. It is on the surface of membrane ना. दिख रहा है Yes, आप लोग? मेम्ब्रेन के सरफेस पे है. तो साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम इज अ स्मॉल प्रोटीन विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. और मेम्ब्रेन का कौन सा सरफेस है? दिस इज योर आउटर सरफेस और इनर सरफेस. Inner surface. इनर इज मैट्रिक्स वाला साइड. इनर इज मैट्रिक्स वाला साइड. इट इज
आउटर वन outer साइड, surface, आउटर सरफेस पे, बिकॉज ये यहाँ पर है, दिस इज आउटर सरफेस. अगर ये इधर होता ना अंदर की साइड, तब हम इसको इनर सरफेस बोलते. तो ये कहाँ पे है? साइटोक्रोम सी एक प्रोटीन है, इट इज अ प्रोटीन विच लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर mitochondrial membrane. And how it is helping us? It is helping us in carrying electron from complex number 3 to complex number 4. 4. What is our complex number 4? Our complex number 4 is cytochrome A3. This is our A3. Then electron get accepted by cytochrome A, then it will get transferred to the cytochrome A3. After cytochrome A3, it will accepted by, Complex 5. it will get accepted by complex number 5. Complex number 5 is your ATP ATP. synthase. Synthetase. ATP synthetase is made up of two components. The first one is your F1, F0 and F1. कितने component से मिलके बना है ये? दो 2 component. components. F0 and F1. What is the role of F0 and F1 here? As you can see here, F0 is like a transporter. Transporter के जैसे work कर रहा है. And F1 is exactly the enzyme. F1 is your synthase enzyme, which is helping for the synthesis of ATP, which is helping us in the synthesis of ATP. F0 is embedded in the membrane now. F0 is embedded in the membrane. Membrane के अंदर embedded है. And F1 वाला क्या कर रहा है? F1, what is F1 is doing here? Hanging down toward the inner membrane or outer side. Inner membrane. Inner side में है. ये हमको याद रखना है. F0 embedded है and F1 is the particular enzyme which is helping us in the synthesis of ATP. तो यहाँ तक हमको ये समझ में आया क्या? Yes, ma'am. समझ में आया? तो हम इसको ना एक बार हैंड रिटन खुद से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज जब हम खुद कोई भी चीज खुद से ड्रॉ करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से समझ आता है. ड्रॉ करेंगे सब? yes ma'am. चलो, let's try to draw it on our arm. So, and just, this is your inner membrane. This is inner membrane. And this is your matrix wala region. And this one is your space, mitochondrial space. So what is happening here? In the matrix wala region, NADH plus H positive getting converted into NAD positive NAD positive plus 2H OH positive plus 2 electrons. electrons. ठीक है? And the first one we have complex 1. 1. ठीक है? These two electrons will transfer to the complex number 1 and then it will get transferred to the complex number 3. 3. Very well done. And the complex number 3 तक help कौन कर रहा है हमको? UQ. UQ. What is UQ? UQ is UB. नहीं. ubiquinone. ठीक है? बताओ, समझ में आया? जैसे ही in the first step, when complex number 1 is accepting 2 electron, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इट विल शिफ्ट. क्या शिफ्ट करेगा? इट विल शिफ्ट 2H पॉजिटिव. 2H पॉजिटिव को शिफ्ट करेगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू inner membranous space. And when ubiquinone will accept these electrons, ubiquinone will again shift 2 hydrogen ions या फिर 2 protons from matrix to Inner membrane. inner membrane. Then complex number 3 is accepting again 2 electrons. ये 2 electrons को accept कर रहा है, तो it will also shift 2 hydrogen ions. ये भी 2 hydrogen ions को shift करेगा. Then complex number 3 से
कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जब आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में, who is helping here? Cytochrome C. Yes. Cytochrome C. Very good. And then, which is your complex number 4? AA3. Cytochrome A and A3. हाँ, AA3 is your complex number 4. Then what is happening here? यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेप हो रहा है. यहाँ पे स्टेप ये हो रहा है कि जो आपके 2H positives आया, वही 2H positives को आपका एक्सेप्ट कर लेगा कौन? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 electron plus 2H positive, and they will make H2O here. Are you getting this step? Yes, ma'am. हुआ क्या यहाँ पे एग्जैक्टली? आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किधर से आया ये? ऑक्सीजन, जस्ट रिमेम्बर फोटोसिंथेसिस वाला स्टेप. In the photosynthesis system, oxygen get released during the photolysis of water. During the photolysis of water, oxygen get released. Wahi oxygen, same oxygen we are using here. These two electrons get accepted by oxygen molecule with 2H positive, and they will make H2O. ये यहाँ पे क्या बनाएगा? H2O. H2O बनाएगा. H2O. It means one NADH में हम कितनी H positives हमने शिफ्ट किए? How many H positive we have shifted? 2H positive. नहीं, we have shifted 2, 4 and 6. 6 H positives 6H. हमने शिफ्ट किया या नहीं किया? Yes, ma'am. 6 H positives हमने शिफ्ट किया. Very good. And then this complex number 4 के बाद we have complex number 5. 5. 5 is just like this, na? This is your F0 and this is your F1. F1. तो ये जितना भी हमारे पास 6H positives है, all 6H positives will come with F0, and this F0 will transfer these H positive to F1. What F1 will do here? Then F1 will do ADP plus inorganic phosphate, and it will convert into ATP. In the formation of one molecule of ATP, during the formation of one molecule of ATP, 2H positive will get transferred. 2H positive usually get transferred during the formation of one ATP. So it means if we need to transfer 6H positive, then how many ATP will produce? 12. 12. 12? Seriously? फिर से सोचो. 3, ma'am. Yeah, exactly 3. How we are getting 3 here? Just have a look. 2H positive say by transferring 2H positive, we are getting one molecule of ATP. By the transfer of 2H positive, we are getting one molecule of ATP. So with the help of 6H positive, how many molecules of ATP will get synthesized? 3. 3. 3. 3 ATP. So in the same way, we have just written na ki one NADH gives how many ATP? 3. 3 ATP. 3 ATP. समझ आया प्रोसेस फिर अभी आप लोगों को? What is the Yes, exact ma'am. process here? Yes, miss. चलो, ये हमको समझ आ गया है. Now we are done with this point. Same like I have told you just for NADH only. मैंने आपको NADH का समझाया है. अगर हम इसको ट्राई करेंगे, then it will be same for FADH. बस FADH में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की जगह पे कौन सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा? At the place of complex number 1, we will use complex Number 2. 2. Rest process is same. बाकी सारा प्रोसेस सेम है. वहां पे कितने H positive हमारे मिलेंगे? 4H positive. By the help of 4H positive, how many ATP will get synthesized? 2. True. 2 ATP. So we all know one FADH forms
2 ATP. 2 ATP. वेरी वेल डन. अभी इस स्टेप को बताओ, ये पूरा जस्ट लुक एट दिस डायग्राम एंड ट्राई कि यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है. Have you just look at the important process? एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है. क्या प्रोसेस चल रहा है? ध्यान से सुनना है. वी आर शिफ्टिंग protons from matrix to inner membranous space. Matrix to inner membranous space. Then again we are shifting these H positives from inner membranous space to Matrix. matrix. साइकिल चल रहा है ना एक. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यही होता है बस. मैट्रिक्स से स्पेस में शिफ्ट किया एंड देन स्पेस से मैट्रिक्स में वापस शिफ्ट करते टाइम वी आर फॉर्मिंग एटीपी. क्लियर? Yes, ma'am. अब यहाँ पे वी आर जस्ट अटैच सम इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी. तो ये लाइंस आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है. जितना मैंने आपको समझाया है ना वही एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है. दिस विल बी योर होमवर्क कि आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी इसका पढ़ के आना है अच्छे से. ये पूरा स्लाइड्स आई शेयर ऑल दी स्लाइड्स विद यू. आप लोगों को समझ में आ जाएगा. हमने जो लास्ट में देखा था ना कि वी हैव एफ नोट एंड एफ वन. So F note and F1 में what is going on? 2H positives are getting transferred and it will make 1 ATP. यही process चल रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is your main point. Okay. यहाँ तक हमने इसको डन कर लिया है and we are left with one topic which is your respiratory equation that we will finish in next class. अच्छा guys, tomorrow you have a class with Khushi ma'am ना? You have physics class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But tomorrow Khushi ma'am will be on leave, so I'll be taking your biology class, and in tomorrow's class, I will finish this chapter. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So make sure कि before coming to the class, you need to revise all NCERT so that I can also take your doubts. So in tomorrow's class, we will study amphibolic pathway and second one respiratory quotient. That will be your completely 15-minute lecture. After that, we will solve all PYQs from this chapter. Chalo, just solve this question. Try to solve it. Option C. Rest. I need everyone answer in the chat section. And जिसने अभी तक attendance mark नहीं कराया, if you have not marked your attendance yet, just अपना attendance mark करा दीजिए please. Everyone please mark your attendance. Mark your attendance first and then try to solve this question. Mark your attendance and just tell me the correct answer. Rihanna, okay. Rihanna, do you want to explain this question? Question explain करना चाहोगे? अच्छा कौन है student? Is there anyone who want to explain this question? पूरा क्लास को आपको ये question explain करना है. Gayatri, do you want to try? I'm thinking, ma'am. Harshida. Yes, ma'am. Just 1 minute. Okay. Very simple question. In the process of conversion of pyruvate to ethyl alcohol, which enzyme we will use?
मिस पहला ऑप्शन यार रिहाना बताओ. Ma'am, it's option number first. Yeah, Harshada. Option number A, ma'am. Very good, very good. They're saying कि on the conversion of pyruvate to the ethyl alcohol, which enzyme we will use, we know very well in the conversion of pyruvic acid to acetaldehyde, we will use pyruvate decarboxylase, and then converting of acetaldehyde to ethanol, Alcohol. we will use alcohol dehydrogenase. In this case, pyruvate is behaving as a electron donor. जो आपका पायरुवेट है ये इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे बिहेव कर रहा है एंड एसिटल्डिहाइड कैसे बिहेव कर रहा है. दिस इज अ सिंपल It's स्टेप an ना. yes. It's an एक्सेप्ट पायरुवेट से फर्स्टली वी विल acceptor. फॉर्म एसिटल्डिहाइड and then acetaldehyde will get converted into Ethanol. ethyl alcohol, or we can say ethanol. So this is behaving as electron donor and this is behaving as electron Acceptor. acceptor. Very nice. So the correct answer is 1 only. Try this question. If it is electron acceptor during oxidation of which of the following? Rehana is saying A. Okay. Trick याद है ना? A city is kept silent for military operations. 4 F4 F4 FAD and F4. Ma'am, option number 2. Can be. Ma'am, it's option number 2. Yeah, Harshada. Rehana, Rupali, Namrita, why are you saying A? We all know ना कि हमारा जो फ्यूमरिक एसिड फ्यूमरेट वाला स्टेप था वहीं पे एफएडी रिलीज हो रहा था. सॉरी मिस So the correct answer is B. ठीक है. So this was about today's class. In the next class we'll start basically we will finish this chapter, entire chapter, with all the expected PYQs, and on the same time आप लोगों को cell cycle and cell division chapter, you have a Sunday test on 17th of December. Yes, ma'am. And you all know the test syllabus. Test syllabus is your cell cycle and cell division. So in tomorrow's Yes, class, ma'am. we will also practice some cell cycle and cell division questions as well as from this chapter. Okay, ma'am. ठीक है. चलो, we'll see you in the next class. आपका सबका attendance mark हो गया है? Yes, ma'am.